Hello everyone, welcome back to our channel Science Site. Today we will discuss important question from reproductive health. So let's start. So the first question is, in context of amniocentesis, which of the following statements is correct? amniocentesis के context में कौन सी statement incorrect है? Option A, it can be used for detection of Down syndrome. Option B, it can be used for detection of cleft palate. Option C, it is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant. Option D, it is used for prenatal sex determination. एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की हेल्प से जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज का डिटेक्शन किया जाता है. ये जनरली 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट वुमेन में की जाती है एंड सेक्स डिटर्मिनेशन में इससे की जाती है, बट इट इज इलीगल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. क्लेफ्ट पैलेट एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जो कि इस टेस्ट से पता नहीं चलता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से फीटस में कौन से फीचर्स को डिटेक्ट नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी सेक्स ऑफ द फीटस. एमनियोसेंटेसिस से सिर्फ क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चलता है. जॉन्डिस एक टेम्पररी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जेनेटिक में. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन्डिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर. एमनियोसेंटेसिस की परमिसिबल यूज क्या है? ऑप्शन ए डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, option C transfer of embryo into the uterus of surrogate mother, option D detecting any genetic abnormality. So the correct answer is option D, detecting any genetic abnormality. लॉ के अकॉर्डिंग इसका यूज सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर के डिटेक्शन के लिए होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for. amniotic fluid की सेल्स को देख के फीटर की सेक्स कैसे पता लगाई जा सकती है? ऑप्शन ए कियास्माटा, ऑप्शन बी काइनेटिको, ऑप्शन सी बार बॉडीज, ऑप्शन डी ऑटोसोम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बार बॉडी. फीमेल सेल्स में एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होती है जिसे बार बॉडी कहते हैं. इससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन. किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हार्मोन का रोल है? ऑप्शन ए पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पैरियर मेथड, ऑप्शन बी लैक्टेशनल एमिनोडिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी बैरियर मेथड लैक्टेशनल एमिनोडिया पिल्स, ऑप्शन डी कॉपर्टी पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैक्टेशनल एमिनोडिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. ओरल पिल्स इमरजेंसी पिल्स एंड लैक्टेशनल एमिनोडिया, इन सब में हार्मोन्स के रोल होते हैं, मेनली प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कौन से हैं? ऑप्शन ए लिपिस लूप, मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी वॉल्व, LNG20, ऑप्शन सी मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टाजेट, ऑप्शन डी प्रोजेस्टाजेट LNG20. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोजेस्टाजेट LNG20. प्रोजेस्टाजेट एंड LNG20 दोनों हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं. प्रोजेस्टेरॉन
और लीवो नॉट जेस्ट्रल रिलीज करते हैं मेनली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए आईयूडीज once inserted need not be replaced. Option B IUDs are generally inserted by the user herself. Option C IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus. Option D IUDs suppress gametogenesis. So the correct answer is option C IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus. कॉपर आईयूडीज यूट्रस में स्पर्म का फैगोसाइटेसिस इंक्रीज करती है एंड फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है. ये गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करती और ये यूज बाय हरसेल्फ नहीं होती है. इस पे मेडिकल प्रैक्टिशनर की नीड होती है एंड ये रिप्लेसेबल होती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली. कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या है. ऑप्शन ए ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस preventing eggs from getting implanted. Option B increases the concentration of estrogen and prevents ovulation in females. Option C is an IUD. Option D is a postcoital contraceptive. सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है. इट इज डेवलप्ड बाय CDRI इन लखनऊ. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस preventing eggs from getting implanted. Now let's move on to question number 9. So the next question is the function of copper ion in copper releasing IUDs. Copper releasing IUD में copper ion का क्या function है. Option A they inhibit gametogenesis. Option B they make uterus unsuitable for implantation. Option C they inhibit ovulation. Option D they suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm. So the correct answer is option D. They suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm. Copper sperm की motility और fertilizing capacity को कम कर देता है. Now let's move on to question number 10. Next question is which of the following is hormone releasing IUD. हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन है. ऑप्शन ए LNG-20. ऑप्शन बी मल्टीलोड 375. ऑप्शन सी लिपिस्लू. ऑप्शन डी कॉपर 7. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए LNG-20. LNG-20 एक हार्मोन रिलीजिंग IUD है जो लीवोनॉर्जेस्ट्रल रिलीज करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी. वेसेक्टोमी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए नो स्पर्म ऑकर्स इन सेमाइनल फ्लूइड. ऑप्शन बी नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडिडाइमिस. ऑप्शन सी वसा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड. ऑप्शन डी इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी. वेसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट या टाइट किया जाता है जिससे स्पर्म एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं पहुंच पाते एंड सीमेन में स्पर्म एब्सेंट होते हैं बट स्टिल एपिडिडाइमिस कंटेन स्पर्म. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडिडाइमिस. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स होते हैं बट सीमेन में स्पर्म एब्सेंट होते हैं बट स्टिल एपिडिडाइमिस कंटेन sperm. So the correct answer is option B. No sperm occurs in epididymis. This statement is wrong. Epididymis में sperms होते हैं but semen में sperm absent होते हैं. ये एक irreversible sterility है. Now let's move on to question number 12. Next question is an ideal contraceptive should be. एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए. ऑप्शन ए यूजर फ्रेंडली एंड इजीली अवेलेबल. ऑप्शन बी लेस इफेक्टिव एंड इरिवर्सिबल. ऑप्शन सी कैपेबल ऑफ इंटरफेयरिंग विद सेक्सुअल ड्राइव एंड डिजायर ऑफ द यूजर. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, मोर इफेक्टिव एंड मिनिमल साइड इफेक्ट होनी चाहिए, सेक्सुअल ड्राइव में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो ऐसा होना चाहिए.
So the correct answer is option A, user friendly and easily available. Now let's move on to question number 13. Next question is tubectomy is a method of sterilization in which. ट्यूबेक्टोमी एक स्टेरिलाइजेशन की मेथड है, इसमें क्या होती है? ऑप्शन ए, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप. ऑप्शन बी, ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली. ऑप्शन सी, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप. ऑप्शन डी, यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली. सो ट्यूबेक्टोमी एक सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन होती है फीमेल्स में. इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट या टाइट करते हैं, जिससे ओवम फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में नहीं पहुंच पाती है. So the correct answer is option A, small part of the fallopian tube is removed or tied up. Now let's move on to question number 14. Next question is which of the following is a hormone releasing intrauterine device? Hormone releasing intrauterine device कौन है? Option A, multi-load 375. Option B, LNG20. Option C, cervical cap. Option D, Volt. So the correct answer is option B, LNG20. Now let's move on to question number 15. Next question is one of the following is not a method of contraception. Which one? इसमें से कौन सा एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है? ऑप्शन ए, कॉन्डोम्स. ऑप्शन बी, पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. ऑप्शन सी, लिपिज. ऑप्शन डी, ट्यूबेक्टमी. So the correct answer is option B, pills of combination of oxytocin and vasopressin. Now let's move on to question number 16. Next question is which of the following is a traditional contraceptive method? Traditional contraceptive method कौन सा है? ऑप्शन ए, नेचुरल मेथड. ऑप्शन बी, बैरियर मेथड. ऑप्शन सी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ऑप्शन डी, सर्जिकल मेथड. So the correct answer is option A, नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया इंक्लूडेड है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट. प्रेजेंट में इंडिया में कौन सा मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वाइडली एक्सेप्टेड है? ऑप्शन ए, सर्वाइकल कैप. ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टमी. ऑप्शन सी, डायफ्राम. ऑप्शन डी, आईयूडीज. So the correct answer is option D, IUDs. IUDs safe, reversible, cheap है and इसीलिए वो widely यूज भी होती है इंडिया में. Now let's move on to question number 18. Next question is copper ion released from copper releasing intrauterine devices. Copper releasing IUDs से जो copper ion release होते हैं वो क्या करते हैं? ऑप्शन ए, make uterus unsuitable for implantation. ऑप्शन बी, increase phagocytosis of sperm. Option C, suppress sperm motility. Option D, prevent ovulation. So the correct answer is option B, increase phagocytosis of sperm. ये sperm की phagocytosis को increase कर देते हैं and fertilization को prevent करते हैं. Now let's move on to question number 19. Next question is the contraceptive method with almost no side effect is. वैसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसके ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन ए, पीरियोडिक एब्सटिनेंस. ऑप्शन बी, क्वाइटस इंटरप्ट्स. ऑप्शन सी, लैक्टेशनल एमिनोरिया. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. पीरियोडिक एब्सटिनेंस, क्वाइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एमिनोरिया ये सारे नेचुरल मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के. इसमें नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके फेलियर के चांसेस थोड़े हाई होते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी. कॉपर टी का क्या काम है? ऑप्शन ए, टू इनहिबिट ओवुलेशन. ऑप्शन बी, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन. ऑप्शन सी, टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस. ऑप्शन टू, इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन. कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी एंड वायबिलिटी को अफेक्ट करती है एंड फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होते हैं उनका क्या वर्क है? ऑप्शन ए, टू इनहिबिट ओवुलेशन.
Option B, to check oogenesis. Option C, to check entry of sperm into cervix and to make them inactive. Option D, to check sexual behavior. So the correct answer is option A, to inhibit ovulation. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है एंड प्रोजेस्टेरॉन एलएच सर्च को प्रिवेंट करता है एंड ओवुलेशन को ब्लॉक करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन. ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एलएच, ऑप्शन सी एफएसएच, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. ये स्पर्मेटोजेनेसिस को सप्रेस करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट. वर्ल्ड की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? ऑप्शन ए 15 ट्रिलियन, ऑप्शन बी 6 बिलियन, ऑप्शन सी 500 मिलियन, ऑप्शन डी 100 मिलियन. सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6 बिलियन. बट अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की 8 बिलियन के अप्रॉक्स है. Now let's move on to question number 25. Next question is one of the legal method of birth control is. Birth control का legal method कौन है? Option A, by having coitus at the time of daybreak. Option B, by a premature ejaculation during coitus. Option C, abortion by taking an appropriate medicine. Option D, by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. So the correct answer is option D, by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. Mostly 10 to 17 days के बीच ही ओवुलेशन डे होती है, तो इस टाइम कंसेप्शन के हाईएस्ट चांसेस होते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. एमटीपी प्रेगनेंसी के कितने वीक तक सेफ मानी जाती है? ऑप्शन ए 8 वीक, ऑप्शन बी 12 वीक्स, ऑप्शन सी 18 वीक्स, ऑप्शन डी 6 वीक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंसेप्शन के हाईएस्ट चांसेस होते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. एमटीपी प्रेगनेंसी के कितने वीक तक सेफ मानी जाती है? ऑप्शन ए 8 वीक, ऑप्शन बी 12 वीक्स, ऑप्शन सी 18 वीक्स, ऑप्शन डी 6 वीक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 वीक्स. बियॉन्ड 20 वीक्स इट्स अनसेफ एंड डेली रेस्ट्रिक्टेड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्डोम. कॉन्डोम्स के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन ए प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी एंड एड्स. ऑप्शन बी यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल्स. ऑप्शन सी प्रोवाइड प्राइवेसी टू द यूजर. ऑप्शन डी सेल्फ इंसर्टेड एंड रीयूजेबल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेल्फ इंसर्टेड एंड रीयूजेबल. कॉन्डोम्स आर सिंगल यूज्ड एंड नॉट रीयूजेबल. ये सेल्फ इंसर्टेड होती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसमें से कौन से में सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं? ऑप्शन ए गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस. ऑप्शन बी गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पिस. ऑप्शन सी एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया. ऑप्शन डी कैंसर, एड्स, सिफिलिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोनोरिया, syphilis, genital herpes. Now let's move on to question number 29. Next question is, which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है? ऑप्शन ए क्लेमाइडाइसिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी जेनाइटल वॉर्ड्स, ऑप्शन डी जेनाइटल हर्पिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जेनाइटल हर्पिस. जेनाइटल हर्पिस एक वायरल एसटीडी है, ये मोस्टली इनक्यूरेबल है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30.
Next question is, which of the following is the most widely accepted method of contraception in India? इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन की कौन सी है? ऑप्शन ए सर्जिकल मेथड, ऑप्शन बी आईयूडीज, ऑप्शन सी इम्प्लांट, ऑप्शन डी इंजेक्टेबल. So the correct answer is option B, IUDs. Now let's move on to question number 31. Next question is, which of the following is not a sexually transmitted disease? कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन सी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंसेफेलाइटिस. बाकी तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted disease? STDs की regarding कौन से statement correct है? Option A, a person may contract syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease. Option B, hemophilia is one of the STDs. Option C, genital herpes and sickle cell anemia are both STD. Option D, the chance of a 5-year boy contracting a STD are very little. So the correct answer is option D, the chances of a 5-year boy contracting a STD are very little. So it's rare in children. Now let's move on to question number 33. Next question is, which one of the following does correctly match a sexually transmitted disease with its pathogens? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा करेक्टली मैच है इसके पैथोजन से? ऑप्शन ए सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ऑप्शन बी गोनोरिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी यूरेथ्राइटिस, बैसिलस एंथ्रिकस, ऑप्शन बी सॉफ्ट सोर बैसिलस ब्रिविस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलेडियम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. Next question is, in which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती उनमें एम्ब्रियो किसके थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है, किस टेक्निक के थ्रू? ऑप्शन ए जिफ्ट एंड आईयूडी, ऑप्शन बी गिफ्ट एंड जिफ्ट, ऑप्शन सी ICSI एंड जिफ्ट, ऑप्शन डी गिफ्ट एंड ICSI. सो द करेक्ट आंसर इज option A, ZIFT and IUD. ZIFT is zygote intrafallopian transfer and IUD is term for intrauterine transfer. Now let's move on to question number 35. Next question is, in case of couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? एक कपल है जिसमें मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम है, उसमें कौन सी टेक्निक फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल होगी? ऑप्शन ए गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑप्शन सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन डी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें हस्बैंड या डोनर स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल ट्रैक में. So the correct answer is option B, artificial insemination. Now let's move on to question number 36. Next question is, embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो किस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिसमें मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी फिमरी, ऑप्शन डी सर्विक्स. So the correct answer is option A, uterus. Now let's move on to next question. 37 is, a childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique is option A, gamete internal fertilization and transfer, option B, germ cell internal fallopian transfer, option C, gamete inseminated fallopian transfer, option D, gamete intrafallopian transfer. So the correct answer is option D, gamete intrafallopian transfer. Now let's move on to question number 38. Next question is, assisted reproductive technology IVF involves transfer of. IVF में किस में ट्रांसफ़र होती है? ऑप्शन ए ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी जाइगोट इनटू द यूट्रस,
Option D, embryo with 16 blastomere into the fallopian tube. So the correct answer is option C, zygote into the uterus. Now let's move on to question number 39. Next question is artificial insemination means. Artificial insemination का क्या मतलब होता है? Option A, artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina. Option B, introduction of sperm of a healthy donor directly into the ovary. Option C, transfer of sperms of a healthy donor to a test tube containing ova. Option D, transfer of sperm of a husband to a test tube containing ova. So the correct answer is option A, artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina. Now let's move on to question number 40. Next question is the stage transfer into the uterus after induced fertilization of ovum in the laboratory is. लेबोरेटरी में फर्टिलाइज्ड ओवम को कौन से स्टेज पे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है? ऑप्शन ए, एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमेयर स्टेज. ऑप्शन बी, एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमेयर स्टेज. ऑप्शन सी, मोडुला. ऑप्शन डी, जाइगोट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोरुला. Morula is more than 16 cell stage. Now let's move on to question number 41. Next question is the test tube baby program employs which one of the flowing techniques? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कौन सी टेक्निक्स होती हैं? ऑप्शन बहुत कम है, उसमें कौन सी टेक्निक फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल होगी? ऑप्शन ए, गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर. ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ऑप्शन सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ऑप्शन डी, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें हस्बैंड या डोनर स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल ट्रैक में. So the correct answer is option B, artificial insemination. Now let's move on to question number 36. Next question is embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो किसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिसमें मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं? ऑप्शन ए, यूट्रस. ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब. ऑप्शन सी, फिमरी. ऑप्शन डी, सर्विक्स. So the correct answer is option A, uterus. Now let's move on to next question. 37 is a childless couple can be assisted to have a child through a technique called gift. The full form of this technique is option A, gamete internal fertilization and transfer. Option B, germ cell internal fallopian transfer. Option C, gamete inseminated fallopian transfer. Option D, gamete intrafallopian transfer. So the correct answer is option D, gamete intrafallopian transfer. Now let's move on to question number 38. Next question is assisted reproductive technology IVF involves transfer of. IVF में किस में ट्रांसफ़र होती है? ऑप्शन ए, ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ऑप्शन बी, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ऑप्शन सी, जाइगोट इनटू द यूट्रस. ऑप्शन डी, एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमेयर इनटू द फैलोपियन ट्यूब. So the correct answer is option C, zygote into the uterus. Now let's move on to question number 39. Next question is artificial insemination means. Artificial insemination का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina. Option B, introduction of sperm of a healthy donor directly into the ovary. Option C, transfer of sperms of a healthy donor to a test tube containing ova. Option D, transfer of sperm of a husband to a test tube containing ova. So the correct answer is option A, artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina. Now let's move on to question number 40. Next question is the stage transfer into the uterus after induced fertilization of ovum in the laboratory is. लेबोरेटरी में फर्टिलाइज्ड ओवम को कौन से स्टेज पे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है? ऑप्शन ए, एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमेयर स्टेज. ऑप्शन बी, एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमेयर स्टेज. ऑप्शन सी, मोडुला. ऑप्शन डी, जाइगोट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोरुला. मोरुला इज मोर देन 16 सेल स्टेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक्स? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कौन सी टेक्निक्स होती हैं? ऑप्शन ए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ऑप्शन बी, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. ऑप्शन सी, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर.
Option D, zygote intrafallopian transfer. So the correct answer is option D, zygote intrafallopian transfer ZIFT. Now let's move on to question number 42. Next question is, the technique called gamete intrafallopian transfer is recommended for those females. गिफ्ट को कौन सी फीमेल्स को रिकमेंडेड किया जाता है? ऑप्शन ए, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम. ऑप्शन बी, हु कैन नॉट रिटेन द fetus inside uterus. ऑप्शन सी, whose cervical canal is too narrow and to allow passage for the sperm. ऑप्शन डी, who cannot provide suitable environment for fertilization. So the correct answer is option A, who cannot produce an ovum. Now let's move on to question number 43. So the next question is, in vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the flowing into the fallopian tube. In vitro fertilization technique में fallopian tube में कौन सी स्टेज ट्रांसफर की जाती है? ऑप्शन ए, embryo only up to 8 cell stage. Option B, either zygote or early embryo up to 8 cell stage. Option C, embryo of 32 cell stage. Option D, zygote only. So the correct answer is option B, either zygote or early embryo up to 8 cell stage. Now let's move on to question number 44. Next question is, testive baby means a baby born when? Testive baby का मतलब क्या होता है? Option E, it is developed in a test tube. Option B, it is developed through tissue culture method. Option C, the ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus. Option D, it develops from a non-fertilized uterus. So the correct answer is option C, the ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus. Now let's move on to question number 45. Next question is, the test tube baby means? Option A, fertilization and development both in uterus. Option B, fertilization in vitro and then transplantation in uterus. Option C, a baby grow in test tube. Option D, fertilized and develop embryo in test tube. So the correct answer is option B, fertilization in vitro and then transplantation in uterus. Next question is, oral contraceptives. Oral contraceptives हैं. Option A, inhibit ovulation and implantation. Option B, alter the quality of cervical mucus to prevent or retard entry of sperm. Option C, increase phagocytosis of sperm. Option D, both A and B. So the correct answer is option D, both A and B. Now let's move on to question number 47. Next question is, which contraceptive method is highly effective but has very poor reversibility? कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जो हाईली इफेक्टिव होते हैं लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है? ऑप्शन ए, आईयूडीज. ऑप्शन बी, इम्प्लांट्स. ऑप्शन सी, इंजेक्टेबल. ऑप्शन डी, स्टेरिलाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेरिलाइजेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48. Next question is, injectables and implants differ from oral contraceptive in? इंजेक्टेबल और इम्प्लांट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से कैसे डिफरेंट है? ऑप्शन ए, केमिकल कंपोजिशन. ऑप्शन बी, मोड ऑफ एक्शन. ऑप्शन सी, हैविंग मच लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड्स. ऑप्शन डी, इनहिबिटिंग ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैविंग मच लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following can be used as emergency contraceptive within 72 hours of coitus to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse? कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी में यूज़ की जाती है विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स? ऑप्शन ए, प्रोजेस्टोजेन. ऑप्शन बी, प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन. ऑप्शन सी, कॉन्डोम. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. So the correct answer is option D, both A and B. Now let's move on to question number 50 and today's last question. So the last question is, surgical method also called sterilization are used as terminal contraception method to prevent any more pregnancy surgical intervention. Surgical method को sterilization भी कहते हैं.
ये एक टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें क्या होती है? ऑप्शन ए इनहिबिट गैमेट रिलीज, ऑप्शन बी इनहिबिट गैमेट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है बट गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मेल में इस प्रोसीजर को वेसेक्टोमी एंड फीमेल में इस प्रोसीजर को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।